Okay, so it's class number 35. Although we had predicted कि by class 35 हमारा theory खत्म हो जाएगा, but I now extend that to class 38. Today evening, tomorrow morning, and Sunday morning. That's it. Our syllabus will be over. So we can say yay, right? So ethics का theory हमारा खत्म हो जाएगा Sunday को. ये almost we are there. उसके बाद क्या करना है? Case studies और केस स्टडीज करना है और क्या करना है आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग डिस्कशन एवरीवन विल बी राइटिंग 2 आंसर्स अगर आप नहीं लिख के लाओगे किसी रीजन से यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द क्लास एंड दैट इज दैट दैट एक्सटेंड्स दिस कंडीशन एक्सटेंड्स टू मी एज वेल अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द क्लास ओके सो यू विल हैव टू राइट 2 आंसर्स एवरी डे टिल 30th of August ओके देन ओनली हमें एथिक्स क्या होता है ओके वो समझ आएगा बिकॉज एथिक्स क्या होता है हाँ 2 क्वेश्चन ऑन एथिक्स एथिक्स क्या होता है एथिक्स आंसर राइटिंग है 60% आंसर राइटिंग है ओके मंडे से मंडे यू विल गेट दी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड फ्रॉम देयर no sorry Sunday evening I will give you the first 2 questions and Monday evening okay you have to be done with it okay मंडे मॉर्निंग तक संडे मॉर्निंग दे दूंगा क्वेश्चन 2 और मंडे मॉर्निंग हाँ 150 वर्ड सिंपल है 10 मार्क्स का 2 पेज का आराम से लिख लोगे ओके इट विल हार्डली टेक 1.5 आवर आराम से हो जाएगा और उसमें आपका रिसर्च भी इंक्लूडेड है ओके उसमें क्या है रिसर्च भी इंक्लूडेड है एनीवेज नाउ लेट अस स्टार्ट सो कॉन्शियंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस कल हमने क्या पढ़ा था एथिकल गाइडेंस का सोर्स में लॉज पढ़ा था और क्या पढ़ा था हमने ओके हमने क्या पढ़ा था लॉज पढ़ा था रूल्स पढ़े थे और रेगुलेशंस पढ़ा था यस आज हम लोग चौथा पिलर which functions as a source of ethical guidance and that is your conscience so conscience is part of our subconscious state that which instruct to act in a particular way conscience क्या है it is part of our subconscious state मतलब we are not fully conscious when we are judging using our conscience we are not fully conscious ओके ये हमारे ब्रेन के डीपली इनग्रेन्ड है ब्रेन के अंदर ये जो कॉन्शियंस का कंपोनेंट्स है इट इज डीपली इनग्रेन्ड इनसाइड आवर ब्रेन ओके not exactly gut feeling is different gut feeling is basically based on your senses okay that something is wrong but something wrong वो morally wrong नहीं है that is gut feeling is to protect you gut feeling is not to judge a moral dilemma conscience is to judge a moral dilemma gut feeling is to protect you physically and mentally ओके गट फीलिंग क्या है एक एनिमल इंस्टिंक्ट का पार्ट है हमारे जो एंसेस्ट्रल मेमोरी है उसका पार्ट है when we used to live in grasslands and we used to live in very tough conditions तो वहां पर हमें बचने के लिए ओके हम हमारा जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स डेवलप हुआ उसमें गट फीलिंग है एंड दिस इज टू सेव यू so not exactly gut feeling conscience is basically it's a trait of your subconscious mind and it is used to judge an ethical or moral dilemma अब समझ आया ओके यस हाँ इंटरनल वॉइस इज द बेटर वर्ड ओके इंटरनल वॉइस आप कह सकते हो कॉन्शियंस इज इंटरनल वॉइस ओके सो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इज आवर एबिलिटी टू मेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन in light of ethical values and principle okay yes ठीक है make a practical decision voice of conscience क्या है voice of conscience is our ability to make a practical decision in light of ethical values and principle जब आपके सामने कोई एक situation आ जाता है okay suppose as an administrator you will be presented with a lot and lot of situations okay lot and lots of situation और वहां पर आप क्या यस टू डिसर्न व्हाट इज राइट और रॉन्ग वहां पर आपको यू हैव टू फॉल बैक
okay, fall back on your conscience to make decisions, okay, to make certain decision. Voice of conscience show a person's moral compass. ये क्या दिखाता है? एक पर्सन का मॉरल कंपस दिखाता है, ओके, ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ओके, ऑफ राइट एंड रॉन्ग, as well as the consciousness of one's action. How conscious we are while taking any action. How conscious we are while taking any action. In other words, conscience can be declared as the moral principle and values that modulates one's behavior and decision making. हमारा जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है, ओके, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस सबसे पहले हमने क्या डिक्लेयर किया? दैट इट इज पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन इन एथिकल डिलेमास. और ये क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है. मॉड्यूलेशन का मतलब पता है आप लोगों को? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है उसको कंट्रोल करता है. तो मॉड्यूलेशन जनरली आपके जो वेव्स होता है उसको मॉड्यूलेट करते हो. यस, जब आपकी जो सिंगिंग होता है, वो सिंगिंग में आपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट. कंट्रोल करना, बेसिकली जो कॉन्शियंस है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर को और हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग. it helps you in decision making and it controls your behavior in front of society. और ये क्या करता है? ये आपका मॉरल कंपस भी दिखाता है. योर वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ऑल्सो शोज what kind of moral compass you are going around with. किस टाइप के मॉरल्स हैं आपके पास, किस आपके मॉरल्स आपको किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ये आपके वॉइस ऑफ कॉन्शियंस से भी दिखता है. ओके, voice of conscience, it starts functioning when a person faces an ethical dilemma and requires self assessment and analysis of the scenario. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट योर वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, आपके अंदर की आवाज, ओके, आपके अंदर की आवाज तब निकलती है व्हेन यू आर फेस्ड विथ एन एथिकल डिलेमा. व्हेन यू आर फेस्ड विथ एन एथिकल डिलेमा और आपको सेल्फ असेसमेंट कि मैं करूं तो क्या करूं, what kind of action am I supposed to do here if there is no set prescribed action that is present beforehand. ये समझ आया? अगर सपोज कोई एक इशू है, यू आर एन आईएएस ऑफिसर और आपको बोला गया कि ये एक पर्टिकुलर इशू है एंड यू हैव टू डील विथ इट, और वहां पर कोई सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, या वहां पर कोई सेट प्रिस्क्राइब्ड एक्शन नहीं है विच यू हैव टू फॉलो, अगर वहां लॉ ऑपरेट नहीं कर रहा है, लॉ इज नॉट ऑपरेटिंग, ओके, लॉ इज नॉट ऑपरेटिंग, तो फिर आप वहां क्या करोगे? यू विल यूज योर कॉन्शियंस, यू विल यूज योर कॉन्शियंस. ओके, सो लॉ के नीचे रहता है आपका जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है, इट विल स्टे बिलो लॉ. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट कैन नॉट सुपरसीड लॉ. अब कॉन्शियंस का बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे देना है, yes, absence of a standard operating procedure warrants the use of conscience, okay, but sometimes it do happen that an individual, due to certain traits that are present in his conscience, he is forced to override, he is forced to do what? Override those standard operating procedures. Okay, वो देखा है आपने टॉम एंड जेरी? टॉम एंड जेरी जो कार्टून आता था, तो उसमें जो था अपना टॉम वगैरह था, राइट, ऐसे होता था ना टॉम. तो उसके कभी कभार व्हेन ही वाज फेस्ड विथ एन एथिकल डिलेमा कि जेरी को मारूं या ना मारूं, तो वो क्या होता था कि एक यहाँ पर एक इविल टॉम आ जाता था, दैट ओके किल हिम, और एक यहाँ पर आ जाता था एक एंजल टॉम, ऐसे करके, सॉरी, ये इविल और ये एंजल, एंड ही यूज्ड टू से, दैट ओके डू नॉट किल हिम, ही इज योर फ्रेंड. ओके, तुम किसके साथ फिर खेलोगे? So this is your conscience, this is your voice of conscience telling you, okay, telling you that what is right and what is not right in an ethical dilemma that you are facing.
एंड व्हेन आई सेड दैट एसओपी नहीं है और लॉ नहीं है, तब आई मेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट एज अ लेमैन। ओके, लेमैन के लिए भी लॉ रहेगा, लेमैन के लिए भी कॉन्शियंस के ऊपर क्या रहेगा, लॉ। ओके, यस, बेसिकली यू आर करेक्ट। एक्सरसाइज डिस्क्रेशन। वॉइस ऑफ कॉन्शियंस कब यूज होता है, व्हेन इन अ सिचुएशन यू हैव टू एक्सरसाइज डिस्क्रेशन। ओके, is it possible कि conscience prompts an individual to take a night might be ethical or right? Yes, it is correct. Conscience किससे बनता है, हमारे वैल्यू सिस्टम से और हमारे मॉरल्स से। और मॉरल्स कौन देता है, वैल्यू सिस्टम और मॉरल्स कौन देता है, हमारे फैमिली देता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस देता है। हम तो सीख के नहीं ना आते हैं, हमारी हमारी सोसाइटी देती है। यस और नो? ठीक है, सपोज एक आदमी है, ओके, एंड ही इज अ सर्विस स्टाफ। तो आपका, आपने बचपन से देखा है कि मेरे फैमिली में और सोसाइटी में सर्विस स्टाफ को पुअरली ट्रीट करते हैं। आपके आपके सोसाइटी में इट इट इज सीन, यू हैव सीन दैट दे पुअरली ट्रीट। सो यू आल्सो थिंक दैट इट इज इन योर कॉन्शियंस, इट इज राइट, ओके, इट इज राइट दैट टू ट्रीट पुअरली द पर्सन। तो आपने दो थप्पड़ मार दिया किसी सर्वेंट को, एंड आपके कॉन्शियंस क्या बोल रहा है, आपका कॉन्शियंस क्या बोल रहा है, दैट अरे ठीक हुआ, बड़ा उड़ रहा था, राइट। लेकिन सपोज आपने अपने सोसाइटी में देखा है दैट वी शुड ट्रीट पीपल रिस्पेक्टफुली, तो आपने अगर थप्पड़ मार दिया तो आपका कॉन्शियंस क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग ट्रॉमेटाइज्ड, यू आर फेसिंग गिल्ट बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट योर वैल्यूज एंड मॉरल्स। ओके, गिल्टी कॉन्शियंस जिसको बोलते हैं, करेक्ट। सो इट इज बेसिकली व्हाट इट इज बेसिकली एन इनर वॉइस। ओके, आपका इनर वॉइस है which has a foundation in the morals and the values that have been imparted to you, okay, that have been imparted to you। ठीक है, correct। so crisis of conscience कब होता है, now let us see crisis of conscience because this is very important for your case studies। ये आपके केस स्टडीज के लिए उबर इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। So, yes, it is a situation when people are confused between right and wrong। क्राइसिस कब होता है, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस क्या होता है समझ आ गया, इनर वॉइस होता है। ओके, और क्या हमने पढ़ा, इनर वॉइस होता है आपका मॉरल कंपास दिखाता है, राइट। और क्या होता है, इट इज डीपली इनग्रेन्ड, इट इज पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस स्टेट, आपको इंस्ट्रक्ट करता है टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। यस, लेकिन अब उसी का क्राइसिस हो जाए, उसी इनर वॉइस का, यस, एक्टिवेट्स ड्यूरिंग डिलेमा, एथिकल डिलेमास। अब यहां पर क्या बोल रहा है, दैट उसी इनर वॉइस का एक क्राइसिस हो जाए, तो उसमें क्या होगा, दैट इन दैट सिचुएशन पीपल आर कंफ्यूज दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अभी मैंने बताया टॉम एंड जेरी में, वो टॉम और जेरी के दोनों शोल्डर्स पे एक इविल जेरी आता था, एक एक एंजल जेरी आता था, राइट। तो वो क्या बोलता था, नो नो डोंट डू दिस, ओके, नो नो, और द इविल जेरी ही यूज्ड टू से नो नो डू दिस। ओके, सो यहां पर क्या होता था, द जेरी इज कंफ्यूज, दैट जेरी माउस इज कंफ्यूज दैट हु टू लिसन, द राइट और रॉन्ग, evil or what should be done, evil or not evil। Yes, in a crisis of conscience situation people worry about their action। बहुत important है that people constantly worry about their action। Why? Can anyone tell me why? Because they want to escape potential guilt, escape potential guilt, that's why people worry। यस, बेसिकली कंसिक्वेंसेस से डरते हैं कि सपोज आई टेक अ डिसीजन, यू आर एन आईएएस ऑफिसर एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर टू डिसमिस अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। तो ये यहाँ पर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या है, कि मैं डिसमिस करूंगा तो आई एम होल्डिंग डिसिप्लिन इन द ऑफिस, बट इफ आई डिसमिस तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, या उसका घर कैसे चलेगा। सो दिस इज योर कॉन्शियंस, बट सो आप क्या करते हो, आप उसको बोलते हो कि सीनियर ऑफिसर देखेंगे, वो क्या बोलते हो, सीनियर ऑफिसर देखेंगे, बिकॉज यू वांट टू एस्केप पोटेंशियल गिल्ट, दैट्स व्हाई पीपल फियर
crisis of conscience. Okay, because they are very wary of having to face consequences of their actions. Okay, yes, consequences का fear होता है. Is evolutionary aversion to risk a factor? Yes, that is also correct. That is actually a very good point that you have raised. Human beings are in general very risk averse species. They do not like to take risks in general. Not everyone, it's not a generalization, but in general, most of the human beings, they want to live, and they want us basically a stress free life. Nobody wants stress willingly, दोस्त. कोई भी stress willingly नहीं चाहता है, and that's why they dread crisis of conscience. That's why they dread the crisis of conscience. Okay, yes, correct. Now, this happens due to the moral principles rooted deep within, which involve self-evaluation and introspection. यहाँ पर देखो, moral principles rooted deep within. आपको मैंने बताया था ये कहाँ से आया. ये आया socialization with family and society. कोई भी बच्चा, क्या कोई भी बच्चा पैदा होता है, ओके, क्या कोई भी बच्चा पैदा होता है with a conscience, or any kid, okay, any kid is born with certain morals and values? The answer is no. The answer is no. No kid is born. He is taught. Okay, he is taught those morals, and it is, he is taught, yes. And conscience is actually a learned behavior which is based on the morals and values taught to you while you were socializing with the society. Okay, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एथिक्स का. दैट विल यू किल बेबी हिटलर? Will you kill baby Hitler if you get a time machine? Okay, suppose you are given a time machine, तो क्या आप बेबी हिटलर को जाके मारोगे to save people from World War II? The answer is no. Okay, see, this is not a yes or no answer. multiple people Multiple people will have, okay, different answers. They will say yes, somebody will say no. Okay, and both of them might have a viewpoint to justify that answer. But अगर आप देखोगे तो logical the logical thing is कि आप नहीं मारोगे. Why? Because the baby Hitler is guilt free. It was his circumstances throughout his life. It was the circumstances which shaped his personality. It was not, he was not a born evil. Nobody is a born evil. Okay, nobody is a born evil. ये ठीक है. ये एक चीज याद रखना, that nobody is born with a distinction of right or wrong. Okay, nobody is born with a distinction of right or wrong. It is a taught behavior. It is a learned behavior. What is right or what is wrong, and this is part. Okay, this is part. Okay, this is part of ethics का कह सकते हैं, ये part है. Yes. एक क्वेश्चन है, will you kill your children which has strange genetic disease? Okay, उस पे क्या आपकी टिप्पणी है? Maybe towards the end of this class we will discuss that. Towards the end of this class we will discuss that. Okay, when a person goes through crisis of conscience, it brings out emotions such as regret, guilt, and shame. Okay, so that's why people dread. People do not want to get into a situation. They want to avoid crisis of conscience because they want to avoid regret, shame, and guilt. Okay, and this avoidance actually leads to inactivity among civil servants. This avoidance, this tendency to avoid situation which might put you in a crisis of conscience situation, leads to inactivity. Okay, leads to high level of inactivity among civil servants. Okay, now let us see interpretation of crisis of conscience.
interpretation of crisis of conscience. So a crisis of conscience is a time when a person faces severe difficulty to decide if his or her action is ethically correct. Okay, ये एक ऐसा टाइम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जहां पर पर्सन को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है दैट इफ हिज और हर एक्शन, जो भी वो एक्शन लेने वाला है, इज एथिकली करेक्ट और नॉट. ओके, अ पर्सन ऑफन अंडरगो प्यूनिटिव फीलिंग्स. प्यूनिटिव फीलिंग्स का मतलब क्या है? ऐसे फीलिंग्स जो पनिश करती है आपको. गिल्ट, मुझे गिल्ट खाए जा रहा है. आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आपको स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि किसी का इनकाउंटर कर दो. ओके, किसी ने बोला स्टेट गवर्नमेंट ने कि आप उसका इनकाउंटर कर लो. आपने बीइंग अ ड्यूटीफुल, ओके, बीइंग अ ड्यूटीफुल सिविल सर्वेंट, आपने बोला कि ठीक है, अगर मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं, ओके, तो मैं कर देता हूं. बट व्हेन यू नो व्हेन यू शॉट हिम डेड, शॉट द पर्सन डेड, आप आपको गिल्ट खाए जा रहा है दैट ओके, आई हैव अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस दैट आई डिड द एथिकली एंड लीगली रॉन्ग थिंग. एथिकली भी रॉन्ग था. ओके, आई डिडंट turn him, okay, turn the accused to the justice system. Okay, justice system को नहीं दिया. And legally भी wrong था because I was not supposed to kill that person. ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होता है? You have to face punitive punishment. प्यूनिटिव फीलिंग्स मतलब क्या होता है? प्यूनिटिव फीलिंग्स मतलब होता है जो अंदर से आपको पनिश करे. ऐसी फीलिंग्स जिससे आपको मेंटली ऐसा लगे कि स्टिंगिंग, देयर इज अ स्टिंगिंग सेंसेशन इन द ब्रेन, दैट अंदर ही अंदर खाए जा रही है. ये आपने सुना होगा ना, हिंदी में बोलते हैं अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है ये फीलिंग. सो दैट इज व्हाट इट इज. ओके, now this situation of moral dilemma can also turn into a more substantial feeling. तो आपने देखा है कि स्नो बॉल कैसे होता है? एक एक स्लोप से आ रहा है. ओके, एक स्लोप से आ रहा है और छोटा सा बॉल है, और वो जैसे ही नीचे आया तो इतना बड़ा होते चला गया. ये स्नो बॉल इफेक्ट इसको बोलते हैं. ओके, इन 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 साइंटिफिक टर्म्स वगैरह में या इन ऐसे नॉर्मल टर्म्स में हम इसको स्नो बॉल इफेक्ट बोलते हैं. तो क्या होता है? व्हेन अ माइनर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, अ माइनर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कैन स्नोबॉल इनटू अ मेजर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस. ओके, सब्सटैंशियल फीलिंग्स में कन्वर्ट हो सकता है. राई का पहाड़ नहीं, नॉट एग्जैक्टली राई का पहाड़, लेकिन ऐसा होता है दैट एक माइनर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है. यू हैव अ वेरी माइनर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस और यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग ऑन दिस, and it turns towards and it takes a very ugly turn. Okay, and it takes a very ugly turn and it starts snowballing into a major crisis of conscience. Okay, now it is when a person fears to end up doing an action that is ethically wrong by not following the voice of conscience. अगर मैं ये नहीं करूंगा तो, अगर मैं if I am not doing the right thing, then what? Will I be able to live with myself? बहुत आपने बार सुना होगा ये, live with yourself. How do you live with yourself? This is basically crisis of conscience. Now one must hold and consider that. अच्छा, ये अब देखो ways क्या है? Ways to resolve a crisis of conscience. Let us discuss that. So one must hold and consider the dimension of the situation, all the dimension rather. Okay, कि what are the dimensions of the situation? Suppose you are tasked. Okay, you are tasked with uh, an inquiry over a subordinate person, and it is up to you. If you will say that he should be dismissed from service, he will be dismissed from service. If एक minute. Okay, so all the dimension, okay, all the dimension you have to see. So you are tasked with an inquiry. Okay, you have been tasked with an inquiry. आपको एक इंक्वायरी दी गई है कि you have to do, you have to decide the fate of that person. So how to avoid this crisis of conscience? By looking at all the dimensions
दैट ओके उसने क्या गलती की है, क्या वो लॉफुल था, उसका जो एक्शंस था क्या वो लीगल था, उसका जो एक्शंस था उसके क्या रिपरकशंस थे, क्या कुछ डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ, क्या उसने कुछ गड़बड़ की, क्या उसका इंटेंशंस कैसा था, उस बंदे का जो इंक्वायरी में है उसके इंटेंशंस कैसे थे। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, और फिर आप अगर डिसीजन लोगे तो देर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू कैन एस्केप crisis of conscience, because when you will go to sleep at night you will say कि नहीं, मैंने I gave him a fair chance to represent himself and I gave him a fair chance when it came to the facts of the case. So अगर अब उसके साथ जो भी होगा it is not, it will not be on my conscience. Okay. Pursuing silence and solitude to assess the self. यहां पर क्या है दैट अगर आप साइलेंस में बैठोगे, एकांत में जिसको बोलते हैं, so you can assess, your feelings, you can assess your feelings, that what I am feeling right now, okay, what I am feeling right now, what I am not feeling right now, what I should feel right now. Okay, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी, then you can listen to the voice of your conscience while making the decision and avoid the crisis of conscience. Basically हर बात में क्या करना है, that we should be at a position to avoid crisis of conscience. Introspection, yes, why we need to avoid crisis of conscience? To escape punitive feelings like guilt, चिंतन मनन, very good, yes, चिंतन मनन कह सकते, then affirmation, prayer and meditation. This will bring strength, self belief and self control. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सिविल सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देयर वाज दिस गाय, ओके, देयर वाज दिस गाय आई न्यू, उसने क्या किया था दैट ही वाज अ वेरी बिग ऑफिसर, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे था, एंड यू नो जा रहा था वो कहीं पर, ओके, ही वाज गोइंग समवेयर, और उसको ही वाज स्टॉप्ड, ओके, ही वाज स्टॉप्ड बाय वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट एंड ही डिड नॉट, द सबऑर्डिनेट डिड नॉट, वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हिज बॉस, मतलब उसको नहीं पता था दैट दिस दिस गाय इज माय बॉस। तो क्या होता उस समय अगर कॉन्शियंस की बात सुनता वो, उस समय अगर सेल्फ कंट्रोल होता उस बंदे पे, तो ही वुड हैव सेड ओके दिस इज माय आइडेंटिटी एंड दिस इज ओके, दिस इज माय आइडेंटिटी एंड आई एम योर बॉस, ओके, एंड प्लीज अलाउ मी टू गो, आप मुझे जाने दो। बट व्हाट ही डिड, दैट गाय वाज ग्रैब्ड हिज कॉलर, grabbed his subordinate's collar and started slapping him left, right and center. Okay. Uh, फिर वहां पर क्या हुआ, दैट गाय ही केम, ओके, ही केम एंड उसने कुछ नहीं बोला, द सबऑर्डिनेट ही वाज जस्ट वेरी अपोलोजेटिक, सर मुझे नहीं पता था आप हैं ये वो, सब बोला उसने। देन द गाय, ओके, ही फेस्ड अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, अ वेरी बिग क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, एंड सच वाज हिज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस दैट ही हैड टू टेक लीव बिकॉज हिज मेंटल हेल्थ डिक्लाइंड एंड ही यूज्ड टू क्राई कि मैंने उस बंदे को क्यों मार दिया, ओके, मैंने उस बंदे को क्यों मारा, मेरी गलती थी। He apologized to him. Still, he had to take a very big leave. He had to go on a leave, and his mental health, okay, went very bad. तो वहां पर क्या क्या था, he underwent punitive feelings, feeling of guilt कि मैंने एक पावरलेस आदमी पे हाथ चलाया। although he was a good person, although he was a good person, but उस समय क्या हुआ, उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं था, एंड ही हैड टू फेस दोस प्यूनिटिव फीलिंग्स कि यार उस बंदे ने कुछ नहीं बोला, मैं उसको थप्पड़ मारते रहा, मैं उसको थप्पड़ मारते रहा, एंड दिस वाज द इशू। ठीक है, तो प्यूनिटिव फीलिंग्स, गिल्ट, गिल्ट आया, ओके, एक गिल्ट की फीलिंग आई, रिमोर्स आया, ओके। देन स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफ यू बिलीव इन समथिंग, इफ यू बिलीव इन समथिंग वेरी वेल, तो इट, you can avoid crisis of conscience because your conscience will guide you in matters of ethical dilemma. ठीक है, in matters of
एथिकल डिलेमा, क्या गांधी जी ने क्या कहा था? व्हाट वाज दैट? गांधी जी ने क्या कहा था? आई एम नॉट वेरी श्योर. So the most effective action to avoid crisis of conscience is to free the mind from materialistic desire, miserable interest, and outer influences. When you will empty your mind from, okay, miserable interests, outer influences, and materialistic desire, you can avoid crisis of conscience. Okay, dedication only to duty. Yes, it's only up to you. Okay, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो see, you one thing that you need to understand, okay, is that when you are a civil servant, you have to operate from a position of strength, from a position of strength. Okay, लेकिन let me tell you this, अब पहले वाली बात नहीं है. आप थप्पड़ मार के आगे नहीं निकल सकते हो. आप थप्पड़, आप हाथ पैर चला के गाली गलौज करके, पहले ना गाली वाली बहुत आराम से दे देते थे, ठीक है, माँ बहन की गाली, यू दिस यू दैट, ठीक है, चॉइसेस्ट ऑफ अब्यूजेस आप दे सकते थे और आप आगे बढ़ सकते थे. बिकॉज जो आपके सबॉर्डिनेट्स थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो बेसिकली दे यूज टू कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड. ओके, एंड दे यूज टू बी वेरी सबसर्वियंट, एंड दे यूज टू बी वेरी फियरफुल कि सर निकाल देगा नौकरी पे तो 4 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और 8 लोग मेरे सैलरी पे खाना खा रहे हैं. तो दे यूज टू डू दैट. ओके, हियर इज द थिंग दैट नाउ आप हाथ पैर नहीं चला सकते हो. योर सबॉर्डिनेट्स हैव आल्सो बिकम very very aware of their, okay, यस नाउ आपका जो मल्टीटास्किंग वाले भी जो आ रहे हैं, दे आर आपसे ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं. Okay, there is a my father, he's a BCom. Okay, BCom honors है. And the person who is who is in his office as a peon, उसके पास मास्टर्स की डिग्री है. जो just joined, there's a person who just joined, उसके पास मास्टर्स की डिग्री है. तो आप समझ जाओ, ठीक है, आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है आज के डेट में. सो दीज एजुकेटेड पीपल दे विल नॉट टेक. तो वहां पर कैसे ऑपरेट करना? यू हैव टू शो स्ट्रेंथ ऑल्सो, यू हैव टू शो स्ट्रेंथ ऑल्सो, यू हैव टू शो डोमिनेंस ऑल्सो. लेकिन आप ओल्ड टैक्टिक्स यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या है, हाउ हाउ टू डू दैट इज टू यूज योर पेन. अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो पेन इज द सिविलाइज्ड वे, पेन इज द civilized way of keeping your subordinate in control. Your pen is very powerful. The government, the system has given you a lot of ways in which you can, maintain discipline. Okay, you have to maintain discipline. अगर बहुत ज्यादा ढील देते हो तो फिर क्या हो जाएगा? आप अगर वॉइस अपनी रेज नहीं करते हो, आप अगर चीजों को नहीं आगे बढ़ाते हो, तो आप पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड. आई अंडरस्टैंड दैट. तो ये गलत है कहना कि अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो. दैट्स नॉट ट्रू. ऑल राइट, दैट्स नॉट ट्रू. क्या हो गया भाई? नो रिस्पेक्ट फॉर मी. ओके, व्हाट्स द इशू? ठीक है, एनीवेज. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है दैट यूज योर पेन. ओके, यूज योर पेन. अदरवाइज क्या होगा? लफड़े में आप पढ़ोगे. ऑल राइट, लफड़े में आप पढ़ोगे. दे विल रेज देयर वॉइसेस. ओके, दे विल स्किप हायरार्की. आपके अगेंस्ट रिवोल्ट हो जाएगा. ओके, आपके अगेंस्ट रिवोल्ट हो जाएगा. एक यूपी में केस आया था दैट, ओके ओके, यूपी में केस आया था दैट देयर वाज दिस गाय, उसने किसी अपने पियून के साथ हाथापाई की थी. सो उसके अगेंस्ट पूरा ऑफिस उठ के आ गया था. बिकॉज यूनियन बाजी बहुत चलती है इन द ग्रुप सी ग्रुप डी डिवीजन. यूनियन बना लेते हैं. दे नो कि इंडिविजुअली मेरी कोई ज्यादा हैसियत नहीं है. सो क्या करते हैं, यूनियन बना लेते हैं. ओके, तो यूनियन बना लेते हैं, फिर वो आपके अगेंस्ट ले जाएंगे और यूनियन के सामने किसी की नहीं चलती है. आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर होंगे लेकिन आपका भी तबादला हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट use your pen as much as possible to maintain discipline, and your pen has enough power. Your pen has enough power which can guide you to maintain discipline in your office. Okay. Examples of crisis of conscience. Let us see what are the examples. So doctors being presented with a dilemma to perform specific treatments which goes against
देयर कॉन्शियंस। अबॉर्शन वाला होता है, ओके, हो सकता है कि ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर, जो भी है, ठीक है, 6 मंथ, 7 मंथ्स, एंड the court has said that okay, it is okay to do abortion, but the doctor knows कि that this is a fully grown baby, 6 मंथ 7 मंथ्स में एक फुली ग्रोन बेबी है, 34th वीक में, 33rd वीक में अगर आप अबॉर्शन के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब यू आर लिटरली किलिंग, ओके, यू आर लिटरली किलिंग अ लाइफ। तो डॉक्टर के पास ये एथिकल डिलेमा हो जाता है दैट शुड आई डू द अबॉर्शन, ओके, ऑल्दो आई हैव गॉट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट दैट आई हैव टू डू द अबॉर्शन, बट क्या मुझे करना चाहिए, ओके, क्या मुझे करना चाहिए, दैट इज वन थिंग। एक और एग्जांपल बहुत अच्छा है केविन कार्टर का, अच्छा नहीं है, थोड़ा दुखद है। केविन कार्टर वाज अ जर्नलिस्ट हु वाज कवरिंग famine in Africa, and he was not allowed to help because of professional purposes, professional commitment. His company, his media company, did not allow Kevin Carter to help any famine victims. So what happened after he came back, okay, after Kevin Carter came back, he faced a deep crisis of conscience that did I do the right thing, did I do the right thing, okay, this crisis of conscience was there, that did I do the right thing by not helping those people of Africa, although it was my professional duty to stay afar, okay, yes, hawk and malnourished baby wala photo aapne dekha ho, and Kevin Carter, he committed suicide because he underwent punitive feelings which punished him, अंदर ही अंदर खा गई। सोल्जर्स इन कन्फ्लिक्ट एरिया, वेरी गुड, इराक में जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, दे वेर ऑर्डर्ड टू किल a lot of innocent civilians, and a lot of US soldiers, when they came back, they underwent punitive feelings because they faced a crisis of conscience, they faced a crisis of conscience, okay, and they committed suicide, that okay, I killed a lot of innocent people, I do not deserve to live, okay, I am feeling very guilty, okay, so ये था आपका crisis of conscience in the evening, okay, in the evening, yes, हाँ, अयालान कुर्दी जो नाम था, अयालान कुर्दी जो था, उसका जो फोटो खींचा था जिस बंदे ने, यस, अगर आपको याद होगा, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस पिक्चर दैट यू हैव सेंट, सो अयालान कुर्दी वाला भी था, जहां पर देयर वाज लॉट ऑफ आउटरीच देयर आल्सो, एंड पीपल, द जर्नलिस्ट हु क्लिक द फोटो, ही आल्सो अपोलोजाइज बिकॉज ही फेल्ट अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कि मैंने एक डेड बेबी, ओके, मैंने एक डेड बेबी का फोटो खींच के, ओके, आई ट्राइड टू मेक फ्यू बक्स ऑफ इट, so that was okay, that was one of the issues, a very good example of crisis of conscience। crisis of conscience में हमेशा याद रखना punitive feelings, okay, punitive feelings। in the evening we will try issues of ethics in public administration और ethical dilemma in public administration, ये भी कर लेंगे, और एक चैप्टर सिटीजन चार्टर्स का भी कर लेंगे हम लोग, ओके, सिटीजन चार्टर पे भी वी विल ट्राई कि एक चैप्टर हम लोग उसका कर ले, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। so we will have the class a bit early, we will be having that class around 5:30, if that's all right with you guys, 5:30 के अराउंड क्लास हम करेंगे, ओके, if you are comfortable with that, ठीक है, yes, okay।